Hey, क्या हाल चाल मेरे दोस्तों एंड मेरे प्यारे प्यारे aspirants. So if I talk about rapid revision for pharmaceutics, so there are lot of topics. Pharmaceutics, pharmacology एक ऐसे subjects हैं जिस पे you can expect major amount of chunk questions to come. And it has lot of subparts. जैसे pharmacology में HAP, pathophysiology, clinical pharmacy and main core pharmacology. चारों डोमेन से क्वेश्चन आते हैं. Similarly in pharmaceutics, physical pharmacy, industrial pharmacy and novel drug delivery system. तीन अलग अलग डोमेन से there could be questions. So we'll be having a quick notes or booster recap for what all topics are to be done. So when you talk about tablet, capsule, parenteral, aerosols, semi-solids, monophasic dosage form and biphasic dosage form. What you have to do, आपको एक ऐसा टेबल बना देना और ये जो एक पेज का टेबल एक बड़ी सी फुल स्केप शीट लो A4 साइज में जो उससे भी बड़ी आती है, ठीक है. एंड ऐसे टेबल बना दो, यहाँ पे लिखो मेथड ऑफ प्रेपरेशन. सो फॉर टैबलेट्स इट इज ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, चिल्सोनिडल्स लगी. कैप्सूल पैरेंटल में जनासी, एलएलएली, रोटोसॉर्ट, रोटोफिल, है ना. So similarly aerosol में vacuum filling, pressure filling, cold filling. Semi solids में also there are different methods of preparation: trituration, levitation, chemical reaction. So iodine ointment बनती है, sulfur ointment is formed, Whitefield ointment is formed जिसमें benzoic and salicylic acid का combination होता है. Monophasic dosage forms are also formed by various methods. Biphasic dosage forms like emulsion and suspension are formed. Then write evaluation tests. So tablets में hardness, dissolution, disintegration, friability, weight variation, uniformity of weight, uniformity of content, content of active ingredient, assay. बहुत सारी टेस्टिंग होती है ना, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल. क्या पैरेंट्रल्स कैप्सूल्स में pyrogenicity, isotonicity, then lal rabbit test and all. Capsules में we have bloom strength, base adsorption, viscosity, moisture content, iron content, pH, isoelectric pH. Aerosol में flash point, flame point, identification of propellant, spray pattern, मॉइस्चर कंटेंट फिर से वहां पे भी चेक करते हैं हम, है ना. सो बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है. सेमी सॉइल में भी ऑल्सो यूज चेक कंसिस्टेंसी, पेनिट्रेबिलिटी, इरिटेबिलिटी टेस्ट, पैच टेस्ट. मोनोफिजिक बायोफिजिक में यू चेक ऑल ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी स्टडीज, डिग्रेडेशन स्टडीज एंड ऑल. सो वो सब चीज़ों का एक इवेल्युएशन. ऐसे एक और कॉलम बना दो रो, ठीक है. ये सारे कॉलम्स हैं, यहाँ पे सारे रोज हैं. उसके बाद यू कैन मेक एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जैसे टैबलेट में कोटिंग है और डिफेक्ट्स है तो चिपिंग, क्रैकिंग, कैपिंग, लैमिनेशन, ऑरेंज पील इफेक्ट, मॉटलिंग. कोटिंग में एंटरिक कोटिंग, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग. सो कैप्सूल्स में भी कुछ एडिशनल पॉइंट जैसे साइज ऑफ द कैप्सूल, टाइप ए टाइप बी जेलेटिन, ग्लिसरोजेलेटिन का रेशियो. पैरेंटरल में ऑल्सो लायोफिलाइजर, व्हाट इज फ्रीज ड्राइंग, व्हाट इज aseptic area class 1 2 3. Aerosol में how do you, what is 140 to 180 psi pressure, propellant के different types and all, वो सारे आ सकते हैं. Then सेमी सॉलिड्स वगैरह में भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ज़्यादा तो उसमें नहीं आते, बट यस ऑइंटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं. हाइड्रोजनस, हाइड्रोकार्बन, ओलियोजनस, एब्जॉर्प्शन बेसिस, वाटर सोल्यूबल, वाटर मिसेबल बेसिस एंड ऑल. सिमिलरली बायोफिजिक में इमल्शन में बैनक्रॉफ्ट्स रूल, सेडिमेंटेशन में डिग्री ऑफ ऑक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, स्टोक्स लॉ एंड ऑल, वो सब आते हैं. Then different kinds of excipients. So tablets में we have binder, glidant, diluent, disintegrant, adherent, abrasives, opacifier. Capsules वगैरह में we have plasticizer and all, है ना. Parenteral में we have preservatives, buffers, isotonicity adjusters. So काफी ज़्यादा excipients हर एक उसमें डाले जाते हैं. So you should be knowing. Semi solid में भी जैसे suppository भी है. So suppository में भी cocoa butter we add. Then we have glycerogelatin base जिसकी density 1.2 times ज़्यादा है. So all those things you need to know. Then displacement value वगैरह. So pharmaceutical calculation की इसी में बात कर लेते तो displacement value पे प्रश्न पूछे जाते हैं, alligation method पे. Then isotonicity पे क्वेश्चन आते हैं, freezing point पे आते हैं, है ना. एब्यूलोस्कोपिक अलग अलग मेथड्स हैं, क्लास 1 क्लास 2, क्रायोस्कोपिक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हर चार, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड और ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना. बैंथॉफ्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर. सो ऐसी अलग अलग आपको चीज़ें पढ़ लेनी है. Yeah, calculations पे there have been questions, right? So make sure that you are thorough with calculation. 0.52 minus a upon b वाले जो formula है, then HLB 20 into 1 minus s upon a, e plus p by phi, e by phi, है ना. कब non-ionic surfactant पे which one you use, hydrophilic colloids पे when you use. Then surface and interfacial tension को measure करने के लिए stalagmometer, drop weight, drop count method, है ना. complex tension को measure करने के लिए Jobs method of continuous variation. So all those methods का application and all we need to know. Do you know a tensiometer? Solubility में the solubility, how to methods of enhancing solubility, co-solvency, hydrotrophy, micronization and all. Then solubility के अगर very soluble, freely soluble का वो chart,
रियोलॉजी में फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के ग्राफ्स, प्लास्टिक सुडोप्लास्टिक डायलेटेड विस्कोमीटर्स, ब्रूकफील्ड, ओसवाल्स, कप एंड बॉब, कोन एंड रेट, कॉम्प्लेक्सेशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेटालिक आयन mediated iron and iron proteins and all. So different complex macromolecular cladderates, channel lattice, layer. Micromagnetics में if I talk about, you have lot of particle sizes, methods, equipment, tap density, bulk density, angle of repose, cars and text, Hausner's show, the tables, excellent flow कब है, good fair flowable flow कब है. So micromagnetics में ये चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती है. And also make sure that you know about the different techniques for particle size, optical sieving, microscoping, sedimentation, Coulter counter and all. Helium pycnometer, mercury displacement method. So you need to know about fundamental as well as derived properties of powder, porosity, bulkiness. Questions आते हैं. Compatibility की अगर मैं बात करूँ तो definitely compatibility पे questions आते हैं. That physical, chemical, biological. What is immiscibility, insolubility, precipitation, liquefaction? What is hygroscopicity? What is eutectic mixture? What is deliquescent? है ना? So you need to know the difference between them. And जैसे eutectic के example thiazolol, menthol, thymol है वगैरह. So they are low boiling mixtures and all. Then Raoult's law के deviation आते हैं, positive and negative deviation of Raoult's law. You need to know that as well. That's important. From French and linear adsorption isotherm, you can just have a look at it. Prescription से parts of prescription, superscription, inscription, subscription. The role of a pharmacist, like patient counseling, different abbreviations है ना, ad libitum, SOS, only when needed and all. So all those abbreviations, TID thrice a day, BID twice a day, QID 4 times a day. So abbreviation Latin terms वाला जो है वो सारी चीजें आनी चाहिए. Ostral तो ears. Then प्रिस्क्रिप्शन में ऑल्सो ग्रीक गॉड JX RX जोव का है जो गॉड ऑफ हीलिंग है बोलते हैं उससे आया है. So what is inscription, what is signature, is which is one is direction given to the patient, which one is direction given to the pharmacist. NDDS की अगर मैं बात करूँ तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसमें adhesives, pressure sensitive adhesives, example of penetration enhancers है ना, DMSO, ओलिक एसिड वगैरह है, sulfoxides. You need to know that. What is release liner, what is a reservoir matrix, control prolonged sustained release, what are the different polymers used, what are the different biodegradable and non-biodegradable polymers, and which one is high acid, hydrophilic, hydrophobic polymers, which is one is enteric coating, Udrajet polymers वगैरह use करते हैं. So you need to know that as well very well in the in the NDDS part. Then different methods of encapsulation, booster coater, spray drying, spray congealing, वो सारी चीज़ों पे प्रश्न पूछते हैं. So make sure that you are well aware about that. So please NDDS से उतना ही. Then we have other parts of NDDS, gastroreductive drugs. So what is raft forming, what is microballoon, that all you can just have a go through. सेमी सॉलिड्स की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स पे एक बार देख लीजिएगा. डिफरेंट काइंड्स ऑफ what is definition, which in which one there is insoluble, more amount of powder, which one there is more amount of liquid, है ना. पेस्ट में अल्लास पेस्ट का composition is very important, it's asked in examination. So एक बार then कार्बोपोल जेल वगैरह एक बार देख कर जाना. मोनोफेजिक बाइफेजिक में इमल्शन सस्पेंशन में डाई डाइल्यूशन कंडक्टिविटी फ्लोरेसेंस जो टेस्ट है इमल्शन की, दो एक बार इमल्सिफाइंग एजेंट्स सस्पेंडिंग एजेंट्स के एग्जांपल, जस्ट मेक श्योर यू गो थ्रू इट अच्छे से. दैट इज सरफेस HLB स्केल, pH स्केल, सोरेनसेंस pH स्केल. सो हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन फॉर सोरेनसेंस pH स्केल एक बार देख लेना अच्छे से, इट माइट बी आस्क्ड राइट. हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस एक बार वो जो टेबल है, वेटिंग एजेंट्स, स्प्रेडिंग एजेंट्स, हाइड्रोफिलिक एजेंट्स है ना. Then you have different O by W emulsifying agents, W by emulsifying agents, then surfactants, about SLS and all. So you need to know that as well. Anti-foaming agents, 1, 2, 3 जिसका HLB होता है. So this is more important from the pharmaceutics point of view. So आपको pharmaceutics में basically यही एक overview देना चाहूँगा that these questions are most frequently asked and they're most commonly asked questions. So make sure that you are very well versed about and go through it. So अगर आपको पसंद आया वीडियो, do like, share, subscribe my channel for more such upcoming videos. Thank you so much everybody.